Hello everyone, let's start with the second lecture of Cytogenetics lecture series, and the topic is standard karyotyping and banding technique. Now, yesterday we have seen that cytogenetics is the study of chromosome, their function, their structure, their abnormality, and to understand all these structures, all these numbers and abnormalities, cytogenetics they use a tool called karyotype. And before proceeding on to what karyotyping and banding technique is, let's have a quick recap of previous lecture, especially the DNA structure. So DNA is the repetition of nitrogenous bases A, T, C, Z. Now DNA cannot fit inside the nucleus because of its free floating structure, because of its thread-like structure. So खुद को fit करने के लिए DNA has to wrap itself around a protein called histone. Now that coiled up structure, it forms a structure known as chromatin. The coiled up structure है, it is named as chromatin. So chromatin is that semi-condensed structure that exists during normal cell activity. But when the cell is about to divide itself during the process of cell division, that wrapped up DNA, it has to further condense itself, it has to further tighten itself. और जो structure उस वक्त आती है during cell division, it is known as chromosome. और उसी chromosome की structure, number, organization, abnormalities, aneuploidy, उन सब की study के लिए we use a method called karyotype. Now karyotype simply is the arrangement of chromosome. वो भी आगे देखते हैं. Then the second introduction is about banding technique. So banding technique is like dyeing, not death, dye, to color, to stain. So when chromosomes are stained, they are clearly and easily visible under high power microscope. So उसकी वजह से if जो जैसे karyotyping के अंदर हमें जो structural arrangements हैं, organizations हैं, उनके अंदर कोई deviations हैं तो वो पता चल जाते हैं. Like if they are more than 46 or less than 46 तो वो पता चल जाता है. फिर उनके साइज में कुछ डिफरेंसेस हैं वो पता चल जाता है. फिर या फिर कोई किसी नंबर पे पर्टिकुलर सेकंड नंबर पे कोई क्रोमोसोम आ रहा है, इट हैज ट्रांसलोकेटेड टू द 22nd पोजीशन, तो वो समझ में आ जाता है. बट इन डेप्थ उसके अलावा भी इफ दे आर म्यूटेशंस, इफ दे आर डिलीशंस, उन सब के लिए द अफेक्टेड क्रोमोसोम नीड टू बी स्टेन, नीड टू बी डाइड, और वो टेक्निक है द बैंडिंग टेक्निक. सो इस टेक्निक की मदद से साइंटिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्पेशली साइटोजेनेसिस, they can visualize individual chromosomes, detect mutations, and explore patterns of human diversity. Now, first, the standard karyotyping method. So, karyotyping is the organized visual profile of an individual's chromosome. In other words, it is the organization of individual profile of chromosome. जो एक आदमी के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की विजुअल प्रोफाइल, which are arranged in pairs known as homologous chromosome. Then they are arranged based on size, centromere position, and banding pattern. And this method, karyotyping, it is standardized globally using the International System of Human Cytogenetic Nomenclature, ISCN. अगर UGC के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, and in general it is for your information. Now how karyotyping is done? First, the cells जिनका क्रोमोसोम स्टडी करना है, they are sourced via बहुत सारे sources हैं. The first one is the peripheral blood lymphocyte, which is a type of white blood cell. और आपके लिए simply the first source is white blood cell, and then other sources are include amniotic fluid, then bone marrow and skin fibroblasts. So these are the various sources of cells. Then these cells, they are cultured and treated with a chemical called colchicine. So इस chemical की वजह से these cells they halt at metaphase. और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि metaphase is the stage when cells are about to divide themselves. और उस stage पे they are tightly condensed and clearly visible. Condensed and visible. That's why karyotyping में this particular phase is preferred.
फिर यहाँ पे दिया हुआ भी है मेटाफेज इज स्टेज व्हेन क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस एंड इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. देन कम्स द थर्ड स्टेज स्टेनिंग एंड फोटोग्राफी. फिर उसी जैसे ये जो केमिकल यूज किया है कोल्चिसिन, उसी इस कोल्चिसिन की मदद से द सेल डिवीजन इट इज हॉल्टेड एट मेटाफेज, कि उसके बाद फर्दर सेल डिवीजन इज नॉट देयर. सो उस टाइम पे हमारे पास सारे कंडेंस विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं. देन दीज क्रोमोसोम्स दे आर स्टेन यूजिंग स्पेसिफिक डाइज, देन उनका फोटोग्राफ लिया जाता है, फोटोग्राफ अंडर माइक्रोस्कोप. फिर जितनी भी इमेजेस हैं दे आर डिजिटली अरेंज इन होमोलोगस पेयर्स फ्रॉम नंबरिंग 1 to 22 फॉर ऑटोसोम्स एंड देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर अरेंज. सो इस तरह से हमारे पास 23 पेयर्स आते हैं. ऑल ऑफ देम आर डाइड एंड डिजिटली अरेंज एंड दैट इज द अल्टीमेट प्रोसीजर ऑफ कैरियोटाइपिंग. फिर उसके बाद what we have finally is a healthy human karyotype consisted of 46 chromosomes which are organized into 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosome. Here comes the importance of karyotyping in anthropology and genetics. So karyotyping, it helps in identifying numerical abnormalities. So numerical abnormalities means if there are mismatches in the numbers. Total 46 chromosomes होने चाहिए arranged in 23 homologous pairs. Now अगर उनमें numerical numbers में कोई problem है, 46 की जगह 45 है, 44 है या 47 है, इस तरह से अगर न्यूमेरिकल abnormalities है वो पता चल जाती है. जैसे ट्राइजोमी 21 विच इज नोन एज डाउन सिंड्रोम. तो इस कंडीशन में जो 21st क्रोमोसोम है वहां पे 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम होता है, इसलिए द नेम ट्राइजोमी. तो ये जो चीज है ये उन क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के बाद ही पता चला है. देन कम्स द मोनोसोमी एक्स या टर्नर सिंड्रोम विच इज 45 प्लस XO, यानी chromosomes are 45 and only one X is there. Then comes Klinefelter syndrome in which there is a extra sex chromosome. So ये सब numerical abnormalities हैं जो है ये karyotype से पता चलती है. Now the next tool is the banding technique. So in one way or another, banding techniques address the shortcoming of karyotyping. Karyotyping से जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पता चल जाती है, बिकॉज karyotyping में व्हाट वी हैव इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल ऑफ विजिबल क्रोमोसोम्स. बट उसके अलावा इफ दे आर मोर टू इट, इफ द प्रॉब्लम्स, द क्रोमोसोमल abnormalities, इफ दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, तो karyotyping वो नहीं बता पाता. तो उसके लिए वी नीड सम फर्दर अपडेशन, और उस अपडेशन की लिस्ट में द फर्स्ट स्टेप इज फिल्ड बाय बैंडिंग टेक्निक्स. सो बैंडिंग टेक्निक्स ये they stain chromosome, they dye chromosome in such a way that they show distinct light and dark bands and which reflect the organization of DNA along the chromosome. ये लाइन आपको अभी आगे समझाते हैं. बट इस स्टेनिंग की वजह से the banding pattern it provide clearer structure of individual chromosomes and then some structural changes can be detected. फिर there are 3 types of banding techniques: G banding, C banding and Q banding. And let's start with the G banding. और उसमें फिर आपको इस पैसेज, इस लाइन का मतलब समझाऊंगा. So it is the most commonly used chromosome binding technique, and it is pronounced as Jimsa banding. फिर इस टेक्निक में the procedure, chromosomes are first treated with trypsin. Now trypsin जो है it is a digestive enzyme that break down protein into smaller peptides in small intestines. So again, trypsin, an enzyme that breaks down protein into peptides in a small intestine. Now why do we are using such protein digesting enzyme in banding technique? So here in banding technique, this trypsin it digests that histone. अगर आपको याद हो, histone is the spool, the protein spool that
coils DNA around it. फिर उसी DNA की जो wrapped up structure है, in normal cell activity it is chromatin, in tightly condensed structure it is chromosome. So ultimately दोनों chromatin and chromosome they are made up of this histone protein. Now to make the chromosome easily accessible, ये histone protein जो है it need to be digested, at least partially digested. So उसके लिए we use trypsin. So trypsin की वजह से ये histone जो structure है ये partially remove होती है, and then we have accessible DNA. Then जो accessible DNA या accessible chromosomes हैं they are stained with gene side. Now gene side जो है it binds differently depend on DNA composition. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत टफ नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स है समझने में. तो जो जिम डाई जो लाइट एंड डार्क बैंड्स है उसमें ये है कि दिस डाई इट binds on the basis of DNA composition. Now there are two kinds of DNA regions. First, AT region and second is GC region. So AT है it is gene poor region and जो GC है it is gene rich region. Now जब gene सा डाई यूज होती है it stain these two regions differently. जो AT region है it will be darker one and the GC region है it will be light one. So that's why जो first मैंने शुरू किया था that gene सा डाई it stain chromosome in such a way that they show distinct light and dark bands. Light band for GC region, gene rich region, and dark band for AT region. Now फिर से trypsin वाला समझ में आ गया. In short, trypsin जो है it opens up the chromosome. Histone को digest करके it opens up the chromosome, make them accessible. Then gene side are used and gene side की वजह से we have two color patterns, dark one for AT region, light one for GC region. Now the appearance. So staining के बाद we will see alternating dark and light bands, दो ही type के color patterns होंगे, and then each chromosome will exhibit a unique banding patterns. Now the applications. This technique it can identify structural abnormalities. Structure means the abnormality in the organization of individual chromosome. So अगर chromosome में कोई deletions है, like some segment is missing, या फिर they are duplication, यानी कोई segment जो है कोई chromosome है वो extra है, फिर translocations like some segment have changed positions, या inversion like segments they have flipped, जो जैसे वो बैक फ्लिप होती है उसी तरह से. सो इस तरह से ये जितनी भी स्ट्रक्चरल abnormalities होती है वो जिम सा बैंडिंग से पता चल जाती है. एंड this banding technique it constructs ideograms. So ideograms are the diagrammatic representation of banded chromosome. Like जो light and dark segments में light and dark staining patterns में जो diagrams है karyotyping के जैसे ही उनका organization है, एक visual profile है, it is known as ideogram. Now शुरू से G banding का एक short overview ले लेते हैं. So first इस प्रोसीजर के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिवाइडिंग सेल. लाइक सेल्स जो होती है सिमिलर प्रोसीजर वही है कि सेल्स आर कल्चर्ड फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल, फ्रॉम amniotic fluid, फ्रॉम बोन मैरो. देन those cells they are halted or arrested by using this chemical colchicine. Now those metaphase arrested cells they have chromosomes that are clearly visible. Then उन cells को they are placed on microscopic slides. फिर उन slides पे trypsin is used, a digestive enzyme, and this digestive enzyme it digests histone and certain other complex proteins so that the chromosome structure can be made accessible. फिर उसके बाद the slide it is stained with Jameson dye. Jameson dye की वजह से this dye it attaches strongly with the AT region
and that's how it produce dark patterns, और second segment GC region जिस पे strongly attach नहीं करती, GC region पे light patterns. Now इस तरह से each chromosome will have a unique banding pattern like a barcode. हर एक, क्योंकि उस particular chromosome पे जो AT and GC, adenine thymine and guanine cytosine, ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से हर एक क्रोमोसोम जो है इट विल रिफ्लेक्ट अ यूनिक कोड, और उसी यूनिक कोड से फिर एक ईडियोग्राम, एक विजुअल प्रोफाइल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर होगा, और उससे जो भी स्ट्रक्चरल abnormalities हैं, लाइक डिलीशंस है, सम सेगमेंट इज मिसिंग, सम either some has been duplicated, some has translocated, or someone have flipped back, उनमें जितनी भी abnormalities होती है वो पता चल जाती है, and that's how G banding works. Now let's move on to C banding. Now C banding or constitutive heterochromatin banding, it selectively stain regions of chromosome that consist of constitutive heterochromatin. Now आगे बढ़ने से पहले certain terms. So जो chromatins हैं, chromatin structure, they can be divided into two based on their activity during genetic expression or gene expression. In simple term, if the chromatin that is made up of DNA, if it is useful or if it is actively involved in gene expression, then it is known as euchromatin, which is necessary for cell growth, cell survival, cell reproduction, and the part of chromatin that is not actively involved in gene expression is known as heterochromatin. So this one is gene active and this one is gene inactive. So basically these two kinds of chromatins are there on the basis of their genetic expression. Now what constitutive heterochromatins are? So पहले ये समझने के लिए you must know it beforehand that not all of the DNA is actively involved in gene expression, और ना ही सारा का सारा DNA जो है is involved in gene activity or genetic expression. So sorry, दोनों एक ही चीज है. तो first, not all DNA is involved in genetic expression. Then second चीज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि not all of the DNA codes for gene. There is junk DNA. कुछ DNA ऐसा भी है which does not code for anything. It is just junk, just repetitive unit है. And second, जो genes हैं, जो segments हैं which code for certain genes, ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे एक्सप्रेस होते हैं. Some are inactive like heterochromatin. फिर जो कॉन्स्टिट्यूटिव की जो स्टोरी है वो ये है that it is a permanently condensed DNA, a DNA type which is permanently condensed. Now this particular segment, it does not open up itself during cell division. It does not decondense during the process of cell cycle or process of cell division. So this particular part is permanently condensed. That's why the name constitutive. Now second चीज आपको बता दी कि it is genetically active, inactive. This reason it is gene active means this particular reason, this segment does not contain any genes that are expressed. फिर this particular reason, it is usually found around centromeres or telomeres. उस इन दोनों जो constricted regions हैं around which the chromatids align themselves, इन regions पे ही ये constitutive DNA या constitutive heterochromatin मिलता है. And its purpose is usually for stability, for structural purposes there. This constitutive heterochromatin, it has a useful role in maintaining the chromosomal stability. And one more thing is there, it always remain compacted and condensed, and it does not ever switch to an active state. जैसे बाकी जो क्रोमोसोम में आपने जितनी भी स्टेजेस देखी है, जो कल हमने इंटरफेज से स्टार्ट करके फिर टेलोफेज तक जो स्टेजेस देखी थी सेल साइकिल में, तो उन सब में डीएनए कंडेंस होता है तो डीएनए डीकंडेंस भी होता है. बट ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज परमानेंटली कंडेंस. दैट्स व्हाई दिस नेम.
constitutive, and heterochromatin means the chromatin which is not genetically active, which is genetically inactive. Now in this procedure, chromosomes, they are stained with alkaline solution plus heat that denature the U chromatin, जो अभी आपको बताएं. The chromatin, the DNA segment or gene segment that are involved in gene expression. So U chromatins वो affect होते हैं, वो denature होते हैं, वो stain होते हैं, but heterochromatin they are preserved. फिर जब these are applied with GIMSA banding या GIMSA dye, only this centromeric regions means region around centromere, and centromere is the constricted region that hold two sister chromatids together. तो यहाँ पे GIMSA जो banding जो है, it will only stain centromeric region, and staining की वजह से this segment will be dark in structure. Then again फिर उसकी स्टडी करके यूजुअली दो तरह के जो स्ट्रक्चरल डिफेक्शन स्ट्रक्चरल abnormalities देखी जाती है, आइसोक्रोम्स एंड मार्कर क्रोमोसोम्स, वो अभी आगे देखते हैं. बट फिर से एक बार सिंपल रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि दिस वन सीम्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर दोज हु हैव नॉट gone through them. So like chromatins, they are divided into two types based on their gene activity. So those which are gene active, they are known as chromatin. Those which are not, they are known as heterochromatin. Now constitutive are the permanently condensed DNA structure या permanently condensed chromatins which do not express themselves ever or do not contain any gene to express them, so they remain in that compact shape. Now these constitutive heterochromatins, they are found around centromeres, and centromere is the constricted region that hold the chromosome, the sister chromatids together. Where the application, the function of the constitutive heterochromatin is to provide structural stability to the chromosome. Other than that, they do not have any function. फिर C banding में this technique selectively stain these centromeric regions जहां पे constitutive heterochromatins मिलता है. फिर procedure के अंदर the chromosome, they are treated with alkaline solution and heat, और उसकी वजह से the U chromatin, it is denatured. फिर उसके बाद they are stained with GIMSA banding. GIMSA banding, the light and dark bands, like in dark state. Where जो GIMSA banding है, it stain the centromeric regions only. So यहाँ पे जो centromeric region है, it will be darker in stain, और उसकी वजह से the structural abnormalities, especially isochromosomes and microchromosomes, if there are any, they will be figured out. Now the application of C banding, first it will help in identifying centromeric variations, जो centromere में variations होते हैं वो. Second, it will look for polymorphism in certain chromosome, especially chromosome 1, 9, 16 and Y. ये दोनों चीजें तो आप याद रख लीजिए. Then जो समझाने वाली चीज है, certain structural rearrangement such as isochromosomes and marker chromosomes will also be figured out via this technique. Now what isochromosomes are? So कल हमने देखा था कि सेल डिवीजन के दौरान ड्यूरिंग मेटाफेज ये सेंट्रोमियर है, they will align themselves to the poles, or they will be an imaginary metaphase plate, और उस प्लेट पे सारे क्रोमोसोम will align themselves, और यहाँ पे उनका जो स्प्लिट होगा with that cleavage furrow, it will be in vertical position. यानी ये क्रोमोसोम है, it will be cleaved vertically. But sometime chromosomes जो है, because of inversion, because of flipping, जो clipping है वो vertically की जगह horizontally हो जाएगी. यानी sometime हमारे पास सिर्फ जो
अगर यही सोचिए, ये वर्टिकल की जगह वर्टिकल फ्लिपिंग की वजह से जो जो टेलोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से, उसकी जगह पे हमारे पास इस तरह से दो आर्म्स होंगे, आर्म्स या लेग्स, और दोनों ही आइडेंटिकल आर्म्स होंगे या आइडेंटिकल लेग्स होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इट इज नोन एज आइसोक्रोमोसोम। फिर सेकंड आता है मार्कर क्रोमोसोम। मार्कर क्रोमोसोम इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये सी बैंडिंग से मिल जाती है। नाउ द एंथ्रोपोलॉजिकल रेलेवेंस, so it is valuable for exploring population specific chromosomal patterns, particularly Y chromosome studies related to male lineage tracing or ancestry। जी सी इसमें जो बैंडिंग टेक्निक है, इट कैन बी हेल्पफुल इन ट्रेसिंग मेल lineage। और वो कैसे? द Y chromosome, it have it has a large block of this constitutive heterochromatin because of its structure। So यहाँ पे ये जो centromere position है, they are large block of these C heterochromatins। and बाकी story आपको पता ही है। तो C banding is solely about constitutive heterochromatin। so यहाँ पे these regions will be highlighted in greater details because of GIMSA banding। और उसी की वजह से यही जो पैटर्न है या जो जो ancestry है, it can be drawn out। Now let's move on to the third kind of banding, Q banding or quinacrine banding। So quinacrine banding or Q banding was the first banding technique before being replaced by G banding later on। And this Q banding, it used a fluorescent dye called quinacrine to stain chromosome। So again, this is about staining chromosome, but the name fluorescent. So in simple term, if you want to understand it in better way, fluorescent dye means glowing dye। So a dye, when stained, it glows because of the wavelength differences। Now in this procedure, chromosomes, they are stained with quinacrine mustard, a kind of fluorescent dye। और बाकी आपको समझ में आ गया, फ्लोरोसेंट डाई जब मैं बोलूँ इसका मतलब है कि क्विनाक्रिन मस्टर्ड है, इट मस्ट हैव अ ग्लोइंग इम्पैक्ट। So when chromosomes are stained with quinacrine mustard and observed under a fluorescence microscope using UV light, so वहाँ पे जो glowing regions हैं, they will be identified। और फिर again उनकी वजह से पता चल जाएगी कि what are the structural problem there। Now the appearance की staining के बाद, this will produce bright and dull bands or glowing or less glowing bands। so दोनों दो कलर्स प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट जो रीजन ग्लो करेगा, जो विच इज द टारगेट एरिया, और जो ग्लो नहीं कर रहा है, दे विल बी डल। एंड नाउ अगेन एक और एनालॉजी यहाँ पे समझने के लिए कि जस्ट लाइक जो जीम्स बैंडिंग है, इट वर्क्स ऑन two regions, AT and GC। So AT regions पे it produce dark bands and GC पे light bands। In the same way, जो Q banding है या quinacrine fluorescent dye है, it glows the AT region and the GC region will be the dull one। So again यहाँ पे Q banding, it will be rich in AT base pairs which will fluoresces brightly, which means they will glow brightly। Now the application, first they are useful in identifying the Y chromosome। Y chromosome ही क्यों? Because they have bright fluorescent region। फिर then this technique is replaced by G banding, but it is still hold significance anyway। Now the summary, so the G banding, it use GIMSA stain and produce light and dark bands। AT rich means G band will produce dark band at the AT region, AT base pair। now the applications, it identifies structural abnormalities। फिर C banding, which is GIMSA post treatment, उससे पहले it is denatured with an alkaline solution plus heat। now this
highlights the centromeric heterochromatin and detects polymorphism rearrangements like marker chromosome isochromosomes. And finally comes Q banding, which use quinacridine mustard fluorescent dye, which produce bright and dull fluorescent bands, and it has the affinity with the AT region. So AT region will grow and GC region will not. And this it one is best for Y chromosome. So this is it. Where in the third part of this lecture series, we will look at chromosomal abnormalities. So this has been uh, quite a technical explanation. उसमें भी फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, you can drop the comments, and this is it. Thank you very much.